All right, so I see most of you have got the file already. So let me quickly remind you of what we did last time. Just to, yeah. So remember last time we were working on we started working on some logical functions, right? So हमारे पास जो है, we had a data set that looked like this, where we had some students. In total, we had about 50 students. We had their attendance in over a year, their overall marks in the year, and then we used some formulas to assign their grades, right? So एक हमने पहले किया कि we have, let's say, only a pass-fail criteria, and using that pass-fail criteria, what we did was we assigned whether a person has passed the course or failed the course based on some predefined cutoffs that we have here, for example, right? And then we said, okay, so this was a very simple case where we just had to categorize students into two groups, basically, one who have passed the course and the others who have failed the course. Okay, then we said कि अच्छा अगर pass or fail के बजाय if we have more categories, so for example if we have A, B, C and then F, we have 4 categories, उसमें हम क्या कर सकते हैं? We said what we could do is we could apply nested if functions like this, right? So this is function inside another function, then another function inside the second one. So we have 3 total if functions here. एक हर if जो है वो पिछले if के अंदर जो है वो apply किया हुआ है, right? So if you don't remember this, you can always go back and review the recording again if you are having any issues here. And as I always say, it's very important to practice it yourself as well. And whatever you're doing here, it's really important कि आप इसको खुद भी replicate करें on your own Excel files. So this was what we did next. And then the last thing we did was in this particular table, we said, what if we have more than one criteria for grading? So for example, यहाँ पे हमने initially क्या किया हुआ, we have A, B, C and F grades, and we have some cutoffs based on marks here. ठीक है? But then we said, अच्छा अगर हमारे पास उसके marks के साथ साथ एक और cutoff भी होता, and that is of attendance. So in order to get an A grade, you both need more than 90 marks, 90% marks. But in addition to that, you also need at least 70% attendance, right? अगर आपकी 70% से कम attendance है, you're not going to be able to get an A grade. आप अगर 60 से ऊपर है, तो you may have to fall in this B category, even if आपके marks जो हैं वो उससे ज़्यादा हो. So the criteria would be कि अगर आपके marks और attendance दोनों in cutoffs से ऊपर है, then you get an A grade. Similarly, these are the cutoffs for B grade, these are the cutoffs for C grade, and otherwise you have an F grade. Okay? So how did we apply this formula? We just said कि हमारे पास वही जो पहले वाला formula था, we just used exactly the same logic. हमने सिर्फ change यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे हम conditions apply कर रहे थे इस रीजन में, फॉर एग्जांपल ये इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर दिस इज द लॉजिकल टेस्ट, राइट, द फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग वन सिंगल कंडीशन, व्हाट वी डिड वाज वी इंस्टेड चोज टू हैव टू कंडीशंस, और इन पे हमने एंड लगा दिया बाहर, राइट. एंड फंक्शन क्या करता है, इट्स ओनली ट्रू when all the conditions inside this function are met. So इसके अंदर हमने क्या किया, and function के अंदर we said C2 is greater than or equal to J11. So in this case, that means marks have to be greater than this cutoff in order to get an A grade. ठीक है, वो A का हमने end पे लगाया होगा कहीं पे. Similarly, and function है, उसके अंदर हमने एक second condition भी लगाई हुई है, and that is that your attendance also has to be greater than these cutoffs.
ठीक है, so हमने multiple conditions लगाने के लिए हमने ये AND function use किया inside that if condition. So this is also possible. अगर आपको multiple conditions apply करनी हो, either with an AND condition or with an OR condition, आप वो दोनों तरह से apply कर सकते हैं, ठीक है? So with by using these functions. So once we're done with this, we also looked at another thing, and that was this function called the COUNTIF function. Right? इसमें हमने क्या किया? Since we had a total of 50 students, which got one of these 4 grades, अब हमारे पास एक table है in which we have the 4 possible grades. What we want to do is we want to count the number of students who got each of these grades. So हमने देखना है कि A grade कितने लोगों का आया, B grade कितने लोगों का आया, and so on. Right? So इसके लिए we said the basic idea is we have to count something, right? लेकिन count हमें करना है based on some sort of condition. So count हमें करना है based on whether somebody got an A grade, whether somebody got a B grade, whether somebody got a C grade, and so on. So उसके लिए we said we have a function called COUNTIF. ठीक है, COUNTIF. इसको मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर देखिए मैंने चेंज कर दिया, वैसे इसको मैंने COUNTIFs कर दिया. So both of them work. जो पहले वाला फंक्शन था ना COUNTIF, this is basically an old function. ये बहुत देर से जो है वो Excel में चला रहा है. But in the recent versions, I'm not sure when it started, maybe in 2010 or 2013. एक और फंक्शन उन्होंने ऐड किया है, that's called COUNTIFS. इसमें there's basically another addition to this function, and that is you can have multiple criteria. पहले वाले function के अंदर multiple criteria possible नहीं थे, right? COUNTIFs के अंदर you could only have one condition, right? COUNTIFs के अंदर you can have multiple conditions. आप एक भी लगा सकते हैं. So जो हमने COUNTIF last time apply किया था, that still works with this function as well, because सिर्फ आपका जो first condition है ये mandatory है, right? अगर आप ये नीचे देखें arguments में, only these are mandatory. The rest are in the square brackets. The square brackets में, if you remember, जो भी arguments होते हैं, जो भी inputs होती हैं, they are optional. So एक criteria or range तो mandatory है, but after that, if more than one is just optional. तो आप जितनी मर्जी add कर सकते हैं if you want. लेकिन एक जो है that is necessary. So remember how this formula worked? It initially it had 2 arguments जो important है यहाँ पे. The first argument is criteria range. उसमें सिर्फ range लिखा हुआ था COUNTIF के अंदर. It's the same thing. Range का क्या मतलब है कि आपको कहाँ से जाके count करना है, right? कहाँ से जाके आपको count करना है. So हमें ये grades count करने हैं. So आप basically range आप वो ही देंगे जिसके ऊपर आप कोई criteria भी apply कर सकते हैं, ठीक है? So criteria हमने जिस range के ऊपर apply करना है, हम वहाँ पे उसी की range देंगे, right? So हमने ये range दे दिए of those 50 students के grades, and then the second argument is what is the condition that we're going to apply, right? Condition हमने क्या apply कर दिया that the grade has to be equal to this cell, whatever is inside this cell. ठीक है, अब नीचे इसको extend करेंगे, हम देखते हैं next cell के ऊपर ये M4 के equal हो गया, next के ऊपर ये M5 के equal हो गया, and so on, and we get these outputs here. ठीक है, so this was a quick review of what we did last time. I thought it was important because it's going to be required that you understand all of these things in order to understand what is going on, what we do today. ठीक है. So any questions in what we have discussed until now today? So I would need some quick responses. Any questions on this?
Okay, so if there are no questions, let me explain how you can use the same function, that's this COUNTIFS function, to instead have multiple conditions, right? अभी तो हमारे पास देखें सिर्फ एक condition थी. COUNTIFS में I said कि आप multiple conditions भी apply कर सकते, right? So now let's assume I have this other table, and इसमें मैं वो pass fail criteria use कर रहा हूँ. So let me change this. This is actually pass and fail, these are not grades. Now what I want to do is I want to count the number of students who passed and also have an attendance of greater than or equal to 80. Okay, and then I could look at the number of students who passed and have an attendance of less than 80, right? And then we have the next cell here where we have the number of students who failed and have attendance greater than or equal to 80, a number of students who failed who have attendance less than 80, right? So this is what we want to do. Now we have multiple conditions now. Okay, यहाँ पे, for example, यहाँ पे number of students कितने होने चाहिए? कौन से conditions पे based होने चाहिए? कि they should have passed the course and also they should have attendance greater than or equal to 80. So हम क्या करेंगे? We're going to use the COUNTIFS function here because we have multiple conditions. Now the first argument is the range that you're going to apply the criteria on. Okay, so let's go there. सबसे पहले pass fail वाली condition, right? So हम ये select कर लेते हैं इस पूरी range को, that's from D2 to D51. Now remember what we have to do to this. हमें इस formula को extend भी करना है बाद में, right? So that means we'll have to fix this range because otherwise हम नीचे move करेंगे तो ये range में नीचे move करती जाएगी, which is not what we want. हम इसको fix कर देते हैं by pressing F4. Then we have comma and we have to apply the criteria. That's all. What is the criteria in this case? Whatever is written inside this cell here. Okay, so we apply this like this. Okay, now ये हमने पहली condition तो apply कर ली, right? Now in the second condition, you're going to see we're going to have some sort of an issue, but let's try applying this. So the second condition is सबसे पहले तो attendance के ऊपर apply करना है. So let's go to attendance first. Okay, so attendance के अंदर आपने ये वाली range, ये वाला column दे देना है पूरा. So remember इसमें पहले वाले के अंदर आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? इस पॉइंट से. तो इसके जो सेकंड क्राइटेरिया होगा उसके अंदर भी आपने वहीं से उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टूडेंट से, और लास्ट स्टूडेंट तक जाना है. ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं फॉर ईच क्राइटेरिया रेंज, दे हैव टू बी इक्वल. अगर यहाँ पे आपने 50 सेल्स इनपुट किए हैं फॉर द नेक्स्ट क्राइटेरिया, इट्स इंपॉर्टेंट कि उसका नंबर भी 50 ही हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उसका नंबर भी सेम हो, अदरवाइज द फॉर्मूला वुड नॉट वर्क. ओके, तो मैंने ये रेंज दे दी अब, बट देन अगेन रिमेंबर आई हैव टू फिक्स दिस रेंज बाय प्रेसिंग F4. तो मैंने F4 प्रेस किया यहाँ पे, आई फिक्स दिस रेंज. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया? द क्राइटेरिया इज अगेन गिवन इन दिस सेल हियर. ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है. इसको मैंने फिक्स नहीं करना बिकॉज मुझे नीचे मूव करना है. I do not really have to, I can't really fix this. If I close the brackets like this, it works, okay? And I can extend it like this. Achha, so what I was actually talking about, that problem is going to come in another example that I'll just show you after this. So it works like this. यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने range दे दी और ये मैंने criteria apply कर दिया, first वाला, and then I have the second range, and then I have
the second criteria कि आपकी attendance कितनी होनी चाहिए वहाँ, ठीक है? So I have multiple conditions now, और मैंने multiple conditions apply करके I can see now how what exactly these numbers are. So there were 12 students who passed the course and they had attendance greater than or equal to 80. There were 25 students who also passed the course and they had attendance of less than 80. And similarly, we have the next two numbers. Okay, so यहाँ पे हमने दो conditions apply कर. But then you see, it does give you an option to just keep adding to this list. आप यहाँ पे एक और third criteria add कर सकते हैं, fourth criteria add कर सकते हैं. So you can basically add as many as you want. So there is an upper limit like 127 or 128 total आप apply कर सकते हैं. But of course, you would never need to go to such an extent. So you can basically just think of it like an unlimited number of conditions. आप जितनी मर्जी conditions apply करना चाहें, आप apply कर सकते हैं essentially. ठीक है? So this is how you can use the COUNTIFS function. Now there are going to be some details to how we are going to use this criteria here. For example, like हमें less than something करना हो, greater than something करना हो. यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इसी cell के अंदर लिख दिया था ना, greater than or equal to something, less than something. But let's say मुझे कुछ और इससे ज़्यादा complicated conditions apply करनी हो. We're going to look at what those other types of conditions could be that we can add to this function here. ठीक है? अभी तो हमने simple सिर्फ ये देखा कि हम किस तरह से ये functions apply कर सकते हैं, उनके क्या-क्या arguments होते हैं, right? Now, so we've understood this, the COUNTIF function, the COUNTIFS function. Now, let me tell you, there are some other functions that behave very similar to these functions. Arguments का इसमें वही जो है इसी तरह के arguments होते हैं, and the formulas work very similarly as well. So I would want all of you to experiment, to basically try working on those formulas as well, or apply करके देखें if you're able to work on them. So you've got SUMIF, and similarly you've got SUMIFS. You've got AVERAGEIFS, and you've got AVERAGEIFS. These are the most common ones. You'll find some others as well, but for now you can try working with these at least. ठीक है? आप ये functions try करें. आप यहाँ पे देखेंगे, for example, if I were to use AVERAGEIF function, I have similar a similar way of writing down the arguments like this. ठीक है? अब इसमें सिर्फ एक additional चीज आती है, which I can show to you right now. Count के अंदर तो, in fact, just let me show you how that formula works. So let me try one of those. So for example, yeah, so let's say average of these marks. Some would not make a lot of sense अगर आप let's say सारे 50 students के marks को sum करें. इस data के अंदर sum does not really mean much. But in another type of data, for example, अगर आपके पास sales data हो, उसके अंदर आपको sum करना हो based on some conditions. For example, आपके पास 5 products हैं और you have daily sales for each of those products. ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? You can apply a SUMIF condition to find, for example, total sales for each product. ठीक है? आप condition apply कर दें कि product एक specific product का एक specific नाम हो और आप उसकी total sales calculate कर लें. ठीक है? That could be one example of where SUMIF might be useful. In this sort of data, जहाँ पे हमारे पास students के marks हैं, average is more important. That makes more sense. So let's apply the AVERAGEIF formula, and let me show you how that works. So let me just do it on the same data here.
यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ. So let's actually do it here. Yes. So number of students के साथ I want to look at the average marks of each of these category of students. Sorry. So by the way, remember मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक और ऐड किया है column, but its formatting is not the same. So a quick way would be इसको select किया मैंने इन सारे cells को. I click on this format painter button and I click here. तो उसने automatically वही format यहाँ पे भी apply कर दिया. ठीक है, so that's a quick way of doing this. Now average marks. So what I want to do is for the students who passed the course and who also had an attendance of greater than or equal to 80, I want to see what were their average marks. Okay, number of students मेरे पास आ गए, but now what I want to do is I want to look at the average marks as well. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे count के अंदर एक argument जो है वो नहीं था, जो यहाँ पे आपको नजर आएगा average के अंदर और sum के अंदर. So I'm going to use this AVERAGEIFS function here because we have multiple conditions. Now the first argument that you see here is called average range. Average range का मतलब ये है, उसके अंदर देखें COUNTIFS के अंदर क्या था, by the way, COUNTIFS के अंदर you only had criteria range, criteria range, criteria, and so on, right? This is what it was in COUNTIFS. AVERAGEIFS के अंदर अगर मैं AVERAGEIFS अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, AVERAGEIFS के अंदर it starts with average range and then I have criteria range 1, criteria range 2, criteria, and so on. ठीक है, so पहला जो आपका argument है that is average range, and that basically means कि you have to tell Excel कि आपको किस कॉलम की आपको एवरेज लेनी है, राइट? तो एवरेज हमने किसकी लेनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है? एवरेज हमें लेनी है मार्क्स की, राइट? मार्क्स की एवरेज हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एवरेज रेंज वाले जो है इनपुट के अंदर, आर्गुमेंट के अंदर वी कैन गिव दिस एज एन इनपुट. इस कॉलम को हम वहां पे इनपुट करते हैं. ठीक है, देन अगेन ऑफ कोर्स वी हैव टू फिक्स दिस रेंज, हमें इसको एक्सटेंड करना होगा. And then the second argument here is criteria range 1. So this works very similar. Criteria range 1, that means कि आपका जो first criteria है वो आपने किसके ऊपर apply करना है. So ये आपका जो first criteria है pass fail वाला, ये आप किस पे जाके apply करेंगे? यहाँ पे आपके पास pass fail वाला column है, that's this column. ठीक है, ये आपका second argument हो गया, range दे दिया आपने. Then of course we have to fix this cell. हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो this cell is going to be fixed, this range is going to be fixed, and comma the first criteria. What is the criteria? आपने ये वाले cell का reference दे दिया, this is the criteria. Criteria range 2, आपको second कौन सी range से range पे criteria apply करना है. Second criteria क्या है? Attendance का. आप वहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे अटेंडेंट वाला कॉलम कौन सा है, that's this column. You're going to input this there. You're going to fix this by pressing F4, comma the second criteria. The second criteria is given here in this cell. ये आपने input कर दिया. Of course we're not going to fix this as well, and we're going to close the brackets. ठीक है, ये मैंने brackets close कर दिए. I've got the average marks for this subset of students. Those students who passed the course and had attendance greater than or equal to 80, उनके average marks ये थे. Now let me extend this formula down, and this is what we get. So इसको हम standardize भी करते हैं. यहाँ पे एक, यहाँ पे कोई decimal place नहीं है, यहाँ पे 2 decimal places हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. So it doesn't look very good. So what we can do is we can select these cells. यहाँ पे number of decimal places we can increase or decrease. So decrease पे click करते हैं, let's say, तो हमें 2 दे देता है. We can have 1 if we want, or we can reduce it even further.
So I'll keep it here. So these are the average marks for each of these subset of categories. Okay. Do you notice something odd in this result, by the way? It's actually the data was created randomly. I mean, there was random numbers वहाँ पे generate किए थे. उसकी वजह से I'm getting something like this. But if this was some real data, do you think there's something counterintuitive here in these average marks that you're seeing? Anyone? So it's one thing to apply these formulas and do all of these calculations, but it's also important to understand what calculations you have done, interpret what you have done. Okay, so that's also important to understand these numbers, to be able to interpret कि अच्छा ये जो numbers मैंने calculate किए हैं, what do I understand from this? So that's also important. So anything that you see here that looks a bit counterintuitive, maybe it doesn't make a lot of sense. Anyone? So यहाँ पे I have 84 average, यहाँ पे I have 89 average. Marks shouldn't be in decimals, Usama says. Well, it's an average, so average can be in decimals. That's not an issue. अब integers की भी अगर आप average देते हैं, it can always be always come out to be in decimals. But look at this table here, right? हमारे पास the first row is of students who passed the course and have attendance greater than or equal to 80. The second row is who passed the course and have attendance less than 80. So on average, what we are seeing is that those students who have attendance below 80% have higher marks as compared to those people who have attendance greater than or equal to 80. जो ज़्यादा classes attend कर रहे हैं उनके कम marks आ रहे हैं on average, और जो कम classes attend कर रहे हैं उनके ज़्यादा marks आ रहे हैं on average. So that's a bit counterintuitive, and that's actually because ये data मैंने randomly generate किया था, so it's because of that. So that's what you find a bit odd here. So it does not mean कि आप कम classes attend करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी. So please do not take it like that. आप लोग वैसे ही Sunday की classes तो माशाल्लाह 2-3 लोग तो हर class में अभी तक absent रहे हैं. So I would really recommend कि आप live classes जो हैं please make sure you do not miss these classes, because these provide you a chance to ask questions as well. So this is very important. So any questions on this? How we applied this formula, average ifs? इसके अंदर कोई issue? I hope it's clear to everyone. Sum ifs is going to work very similarly. उसमें भी आप देखेंगे आपके पास एक sum range वाला argument होगा initially. Sum range, उसमें आप बताएंगे कि आपने किन cells को sum करना है, and then you have criteria range and criteria. COUNTIF के अंदर we did not have that first argument, because count में तो it doesn't really matter कि आप जो है किसी numbers को count कर रहे हैं, text को count कर रहे हैं, आपने जो criteria range में जितने cells आ रहे होंगे उन्हीं की basis पर वो count कर लेगा. ठीक है, आपको इसमें कोई अलग से range देने की जरूरत नहीं. So that's why that argument is not here. लेकिन sum if के अंदर, average if के अंदर, that first argument is going to be there. यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपको किन cells को sum या average करना. All right. So if it's clear, I would like to move on. So let me give you a few seconds in case you have any questions here. And any questions on this?
ओके अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया कि काउंट इफ के अंदर ना, जिसने मैंने कंडीशंस अप्लाई किए ना, नाउ there could be a lot of different things that you can do on this criteria. अभी तक तो हमने सिर्फ देखा, हमने सिर्फ ये किया कि अच्छा इस सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसकी बेसिस पर हमने उसको कंडीशन अप्लाई कर दी, राइट? But a lot of times you do not have such cells, या आपके पास इस तरह से डेटा अलग से गिवन नहीं होता like this. आपको फॉर्मूला के अंदर ही वो क्राइटेरिया थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है. So let me show you what I mean by that. If you move to the second sheet in your files, it's the COUNTIF. It's named COUNTIF. ठीक है, इसमें आपको COUNTIF यूज करके I'm going to show you how you can apply different criteria, but the logic is going to be the same for the other types of functions as well. So SUMIFS के अंदर भी you can use the same thing, AVERAGEIFS के अंदर भी you can use the same thing. ठीक है, so the first thing you need to understand is so COUNTIF is not case sensitive, right? So that means if I were to look at this data, अब यहाँ पे देखें, I've got this table here. I've got information about some fruits and I have their weights. I'm not sure what the unit here is. Let's assume we're talking about some yeah, so let's say we're talking about some shopkeeper here. So he has a lot of fruits. So we're talking about kgs here. Okay, so apples he has about 32 kgs, oranges he has about 54 kgs, and so on. Okay, so this is the data that we have. अब इसमें maybe let's say आपके पास different types of apples हैं. It's not clear here, but let's say there's one bunch of apples that is of there's one basket of apples that has 32 kgs in it. There's another basket of apples that has 86 kilograms in it. Okay, now if you look at what is written below, ये सारे जो हैं मैंने already explain किए हुए हैं, formulas भी apply किए हुए हैं. We're only going to edit these formulas and try to understand कि exactly यहाँ पे क्या किया हुआ, किस तरह से अप्लाई किया हुआ. ठीक है, so let me change the view a bit so you can see the formulas clearly as well. So yes, acha, so this is the data. Now let's say what I want to do is I want to count the number of cells with apples in cells A2 through A5. So basically what I want to do is in cells के अंदर I want to count the number of cells that have that have apples in it. ठीक है, अब देखें COUNTIF अप्लाई किया. COUNTIF के अंदर the first argument is मैंने वो range दे दी. इसमें मैंने extend नहीं करना था formula को, तो मैंने इसको fix नहीं किया, but I can fix it if I want. That doesn't make a lot of difference here. But the criteria argument, what I've done is I've written down this condition as inverted commas, और मैंने यहाँ पे देखें कुछ मैंने letters small रखे हैं, कुछ मैंने capital रखे हैं. But even if I do this, देखें ऊपर जो apples रखे हुए हैं, they're all in small letters. ठीक है, but in this case what I've done is I've used capital letters as well. So you'll figure out it doesn't make any difference. आप ये भी जो है आपको दोनों apples वाले return कर देगा. So it's not case sensitive basically. That's what it means. ठीक है, आप यहाँ पे capital लिखें, small लिखें, it is still going to match that. ठीक है, so that's the first thing you need to know about these criteria for all similar functions, SUMIF, AVERAGEIFS, COUNTIF. They're all not case sensitive. ठीक है, okay. Now let's say what I want to do is
you want to count the number of cells that have peaches instead of apples. So again, what you can do is, अब आप criteria के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी क्राइटेरिया के अंदर इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो एग्जैक्ट लिखने की बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी सेल को रेफर कर दें. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीचेस काउंट करने थे, तो वो लिखने की बजाय क्या किया, A4 को रेफर कर दिया. राइट, वी कैन फिक्स इट एज वेल इफ वी वांट. अगर हमें एक्सटेंड करना होता फॉर्मूला को, तो वी कैन फिक्स दीस. But that's what it means. So हमने पहले रेंज दे दी, then we have the criteria. और क्राइटेरिया जो है वो रेफरेंस भी हो सकता है किसी सेल का. ठीक है, that's what we've been doing earlier as well. Okay, so this works as well. Now, you can also be a bit more creative. Now, what that means is, अगर आपको ये करना होता कि you want to count the number of apples and the number of oranges, आपको दोनों चीजें काउंट करनी है. आपको नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे एप्पल्स लिखा हुआ है वो भी काउंट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे ऑरेंजेस लिखा हुआ है आपको वो भी काउंट करना है. ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द काउंटिफ फंक्शन ट्वाइस हियर. व्हाट दैट मीन्स इज, ये देखिए आपके पास एक तो फंक्शन हो गया, आपने एप्पल्स को काउंट कर लिया. ठीक है, सो दिस इज द पार्ट that counts the number of apples in this range. अब देखिए ये फॉर्मूला आपको क्या करेगा, it's going to return you some number. आपको ये इसकी आउटपुट क्या होगी इस फॉर्मूला की, ये आपको रिटर्न देगा 2 रिटर्न देगा. हमने ऊपर भी देखा इसका रिटर्न जो है 2 आएगा बिकॉज एप्पल्स यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं. ठीक है, सिमिलरली देयर इज अनदर फंक्शन दैट वी कैन अप्लाई एंड दैट इज counting the number of oranges, जहाँ पे क्राइटेरिया की जगह हमने क्या लिखा है A3 is oranges. ये क्या करेगा, number of oranges काउंट कर लेगा. And then what we can do is, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनको हमने ऐड कर लिया. ठीक है, so this is what you can do using COUNTIF function if you want. आप multiple क्राइटेरिया अप्लाई करके देखिए यहाँ पे एक तरह से और कंडीशन अप्लाई कर दिया आप. ठीक है, और कंडीशन में क्या हुआ कि either you have apples here or you have oranges. आपने दोनों का एटलीस्ट एक भी चीज, एक भी क्राइटेरिया अगर एटलीस्ट मैच कर रहा है तो आपने उसको काउंट कर लिया. It's either apples or oranges. आपने उसको काउंट कर लिया, तो this is the way to do it using the COUNTIF function. अच्छा, now at this point I would also want to show you another thing, just to make you understand how this formula is really working and to show you a very useful feature that you'll be able to apply on other functions as well. So आप यहाँ पे show करके, I can go back and show the same thing on the nested if condition that we applied earlier. हम वो भी देख सकते हैं, but at some point later. For now, I'm going to show you how this formula is actually applied step by step by Excel, ताकि आपको इसकी understanding थोड़ी सी बेहतर हो जाए. So if you select the cell and then go to the top, आपके पास एक formulas tab आ रहा है ऊपर. Okay, home, insert, page layout, इस पर से fourth आपके पास tab है, that's formulas. आप इस पर click करेंगे. And if you go towards the right here, आपके पास ये देखिए show formulas का बटन आ रहा है. This is what you can click to shift from this view. जो मैं आपने देखा होगा मैं formula show कर देता हूँ कभी और कभी मैं normal जो है वापस चला जाता हूँ formulas के result के ऊपर. So this is what you can do. I basically use a shortcut. But you can also use this button here, show formulas. क्या करते हैं, आपको पूरी sheet के अंदर formula show कर देते हैं. अच्छा, that's one thing. But what I was going to show you right now was how this formula is basically working. अब इसको select करेंगे, इस cell को. Formulas tab के अंदर you've got this button called evaluate formula. देखिए आप evaluate formula के ऊपर अपना ये mouse hover करेंगे without clicking.
it's going to show you कि ये क्या करता क्या है. So it debugs a complex formula evaluating each part of the formula individually. So ये क्या करेगा, हर part को step by step solve करेगा. ठीक है, let's click on this. आपके पास ये window आ गई. So when you click on that, you're going to see this window here. ठीक है, now what you're going to do is you're going to look at this formula here. अब देखेंगे ये formula यहाँ पे वही formula इधर show हो रहा है आपको, and you're going to click on this evaluate button once. अब इस evaluate button के ऊपर click करेंगे तो देखें, this is the first step, the first thing that this Excel formula does. So let me actually go back and do this again to show you some other thing. अब देखें ये formula था, इसने A2 को underline किया हुआ है यहाँ पे, A2 को सबसे पहले underline किया हुआ है. That means अभी Excel सबसे पहले इस चीज को evaluate करेगा. ठीक है, सबसे पहला जो step होगा वो A2 को evaluate करना होगा. सब A2 देखें रेफरेंस है किसी सेल का, तो एक्सेल क्या करता है, सबसे पहले स्टेप में आप इवैल्यूएट बटन पे क्लिक करें. देखिए A2 की जगह उसने क्या किया, A2 की जगह उसने एप्पल्स लिख दिया वहां पे, राइट. A2 की जगह क्या हुआ, एप्पल्स रखा गया, उसने A2 को इवैल्यूएट कर लिया. A2 की जगह उसने A2 के अंदर जो भी वैल्यू थी वो वहां पे इनपुट कर दी फर्स्ट स्टेप के अंदर. ओके, अब सेकंड स्टेप में उसने क्या किया है, देखिए उसने पूरा फंक्शन अब अंडरलाइन कर लिया. तो अब ये पूरे फंक्शन को सॉल्व करेगा इस सेकंड स्टेप के ऊपर. सो व्हेन यू क्लिक ऑन द इवैल्यूएट बटन अगेन, ये देखें उसने आपको उस फॉर्मूला का रिजल्ट दे दिया. ये फॉर्मूला क्या करेगा, आपको 2 रिटर्न करेगा इस स्टेप के ऊपर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग व्हाट इज इन दिस A3 सेल. देखिए उसने वो अंडरलाइन किया हुआ है. सो वी क्लिक ऑन इवैल्यूएट और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे A3 के अंदर क्या वैल्यू थी, दैट वाज ऑरेंजेस. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप उसने वो पूरे को अंडरलाइन कर लिया. तो यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन को इवैल्यूएट करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यू हैव 1 हियर कि उस फंक्शन की आउटपुट 1 होगी. ठीक है, फर्स्ट की आउटपुट 2 थी, सेकंड वाले की आउटपुट 1 थी. अब उसने क्या करना है, 2 + 1 इसको इवैल्यूएट करना है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन इवैल्यूएट नाउ, देखिए उसने आपको 3 रिटर्न कर दिया, एंड दिस इज योर फाइनल आउटपुट. ठीक है, ये आपको जो पूरा फंक्शन है आपको 3 रिटर्न करेगा, बिकॉज दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हियर, द नंबर ऑफ टाइम्स that apples and oranges are written here in total. 3 cells here. Okay, is this clear to everyone? Any questions on this? Okay, so if this is clear, let's look at the next cell now. अच्छा, अब देखते हैं हम क्राइटेरिया जो हमारा आर्गुमेंट है उसमें हम डिफरेंट कंडीशंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. सो let's say what we want to do is we want to count the number of cells that have value greater than 55. ठीक है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 55 है इस रेंज के अंदर. तो हम क्या करेंगे, रेंज तो हमने दे दी वही B2 से लेकर B5, बट नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट हैव वैल्यू ग्रेटर देन 55. जब इस तरह का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं जिसमें आप किसी नंबर के साथ आपको less than or equal to, less than या greater than या less than or equal to या greater than or equal to या equal to apply करना है, this is going to be the syntax for that. आप inverted commas के अंदर इसको लिखेंगे even though it's a number, लेकिन क्योंकि ये
इस ऑपरेटर के साथ आ रहा है, that's greater than, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे जब भी आप नंबर के किसी नंबर के साथ आपने ये कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। सो ग्रेटर देन 55 करना है, अब क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन 55। सिमिलरली यू कुड हैव लेस देन 55, ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, उसके लिए आप इक्वल टू साइन यहाँ पर डाल देंगे। तो ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल, बट द सिंटैक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। कि आपने नंबर खुद से यहाँ पे कोई इनपुट करना है, तो दिस इज द वे टू डू दिस। अच्छा, now it's also possible that instead of having an exact number here, what you want is कि आप जैसे बेस्ट प्रैक्टिस हमने डिस्कस की है मल्टीपल टाइम्स कि नंबर इनपुट करना इन अ फॉर्मूला इज जनरली नॉट अ गुड आइडिया। तो आप किसी सेल को रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। अब सेल को रेफर करने के लिए इक्वल टू कंडीशन में तो इट्स फेयरली सिंपल। अगर आपने सिर्फ ये करना है कि वो जो भी उस सेल के अंदर वैल्यू है उसके इक्वल वही आपका क्राइटेरिया, लाइक वी डिड हियर इन दीज फंक्शंस, कि इसमें क्राइटेरिया क्या था कि जो भी इस सेल के अंदर पड़ा हुआ है बस वो हमारा क्राइटेरिया, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पास है, दैट्स आवर क्राइटेरिया, इक्वल टू पास होना चाहिए। यहाँ पे अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इस सेल का रेफरेंस दे दिया, व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड दैट, that's our criteria. But now in this case, what we are doing is we do not have those things written in any particular cell. हमारे पास सिर्फ ये नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं। अब इनके ऊपर इनको यूज करके हमने कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना है। So for example, what I want to do in this cell is we want to count the number of cells that have a value that's not equal to 75. So in cells के अंदर हमें काउंट करना है कि कितने cells की वैल्यू 75 के इक्वल नहीं है। So it's very clear here, it's 3, but of course when it's a large data, आपके पास thousands या hundreds of thousands of cells हैं, उसके अंदर you're not going to be able to do it manually, so this formula will be able to help you there. But this is how the logic works, and that basically is जब भी आप किसी सेल का रेफरेंस देंगे ना यहाँ पे, और आपको कोई इस तरह का कोई ऑपरेटर अप्लाई करना है, less than or equal to, greater than or equal to, less than, greater than, equal to या not equal to, not equal to के लिए this is the sign that you use in Excel. This is a sign for not equal to, ठीक है। अब less than और greater than का साइन इकट्ठे डाल दें, it means not equal to in Excel, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह का ऑपरेटर डालना है और आपको किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू है उसके साथ आपको उसके ऊपर ये अप्लाई करना है, तो this is the syntax that you're going to be using for that, and it looks like this. Inverted commas के अंदर आप ऑपरेटर डालेंगे because that's essentially a text, ठीक है। Inverted commas के अंदर आप ऑपरेटर डालेंगे, then you're going to have this and sign, ठीक है। and sign basically क्या करता है, ये different strings को या different texts को concatenate कर देता है। concatenate का मतलब होता है combine कर देता है, merge कर देता है, ठीक है। so and यहाँ पे क्या करेगा, B4 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो इस साइन के साथ अपेंड कर देगा, ठीक है। तो ये एक्सेल क्या करेगा, B4 में वैल्यू इवैल्यूएट करेगा, सबसे पहले वो 75 होगी, 75 यहाँ पे आ गया, और फिर क्या करेगा, 75 के साथ इस ऑपरेटर को जो है वो अपेंड कर देगा, लगा देगा उसके साथ, और फिर वो क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करेगा। दैट्स व्हाई द सिंटैक्स इज लाइक दिस, कि आपका ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा पहले, then you have this and symbol,
and then you have the reference to that cell जिसके आपने not equal to करना, ठीक है? So this is how it works. This is the same as using this thing here जो आपको यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, count if वही range और criteria अगर आप let's say number वहां पर लिखना होता less not equal to 75, not equal to 75 के बजाय आप क्या करना चाह रहे हैं 75 जहां पर लिखा हुआ है उसको आप उसका आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो you're going to have to use syntax that looks like this. Okay. Now these are things that you should not really worry about if you think you're going to forget that. So you don't generally memorize these things. So for example, I reviewed this before teaching today. कि अच्छा syntax इसका क्या होता था, because it's generally if you're not using it on a day-to-day basis, you tend to forget this. आपको let's say एक महीने में जाके या let's say कुछ महीनों बाद कभी ये function use करना पड़ता है एक दफा या दो दफा, तो it might not be easy to remember it all the time. You can always look it up. You can just Google COUNTIF function. उस पे आप COUNTIF का syntax आप उस पे सर्च कर लें. एक्सेल की आपको बहुत सारी हेल्प फाइल्स मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाएंगे जहाँ पे you'll have this syntax available, and you can always look it up and apply it like this. So the main thing is to understand how it works. So once you understand how it works once, even if you forget the syntax at some point later, it doesn't really matter, because that's the easy part. Or you can just look it up in a few seconds. आपको वो syntax मिल जाएगा, and then since you know how to apply it, you're going to be easily able to do it once you have the syntax there. ठीक है, आपको syntax मिल जाएगा. आपको जब understanding develop होगी है, looking at the syntax is not really very difficult. Now let's look at the next cell. Now let's say we've got multiple conditions, right? So आपको count करना है, for example, the number of cells that have a value greater than or equal to 32 and less than or equal to 85. आपको दो conditions apply करनी है, greater than or equal to 32 हो और less than or equal to 85 हो. So basically 32 और 85 के दरम्यान में कितनी values हैं इन cells के अंदर ये आपको calculate करना, ठीक है? Now it's clear 32 और 75 के दरम्यान में you've got three values here. 32 और 85 के दरम्यान में you've got three values here. The first three values. So इसका result 3 होना चाहिए. You already know the output since the number of cells that you are working on is very small. But this is how the logic is going to be. So this is one way of doing this. आप क्या कर सकते हैं? You have this formula, the first one. You count all the cells that have values greater than or equal to 32. ठीक है? अब इसका रिजल्ट ऑफ कोर्स इट्स क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 32 का तो मतलब है इट्स गोइंग टू बी ऑल सेल्स, राइट? 32 से ज्यादा इसमें सारे सेल, 32 से ऊपर इसमें सारे सेल्स इंक्लूडेड होंगे. दैट मींस you have all of these four cells included. इसमें 86 भी आ जाएगा because greater than equal to 32 के अंदर तो 86 भी आता है, right? But then you can subtract from that all the cells that have value greater than 85. जब आप greater than 85 को निकाल देंगे उसमें से, इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ वही values रह गई हैं जो 32 से तो greater than equal to थी, लेकिन now they are less than or equal to 85 as well, because greater than 85 वाली जो values हैं वो आपने subtract कर दी.
निकाल दी, ठीक है। So this is one way you can apply this condition like this. There's also another way. आपको COUNTIFS function अब पता है, आप क्या कर सकते हैं, multiple conditions उस तरह से apply कर लें using the COUNTIFS function. इसमें आप multiple conditions apply कर सकते हैं. So for example, criteria range 1. So first range क्या होगी, वो तो यही होगी. B2 से B5 हमने इसको extend नहीं करना इस formula को. So there's no need to fix anything. You can just apply it like this. सिर्फ एक cell के ऊपर apply करना हो तो हमें कुछ as such fix करने की जरूरत नहीं होती. Fix करना तब जरूरी होता है जब आपको extend करना हो formula को, drag करना हो formula को. So this is the first range. The criteria is let's say less than greater than or equal to 32. Okay, that's the first criteria. You can have the second condition. Again, the criteria range is the same. उसी के ऊपर आपको apply करना है तो आप वही range दोबारा दे दें. And the second condition is it has to be less than or equal to 85. You close the inverted commas and you have the brackets closed as well. And this formula works like this. ठीक है, ये आपको वही same result देगा जो हमें पहले भी मिला था वहाँ पे. Let me show you the result here. So you see, यहाँ पे भी आपको 3 result मिला है, यहाँ पे भी आपको 3 result मिला है. So there are multiple ways of thinking about this. So this is generally going to be the case as well. Many things you can do using multiple different ways. So you should understand this as well कि हर चीज को करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता. There could be multiple ways of doing it. अच्छा, now let's look at another thing. So there are two more things that I want to discuss, and they're going to be very useful at other places later on as well. When we are working on text functions. So a lot of times what you want to do is, for example, let me show you something. मेरे पास for example इस तरह होता है. So when I'm teaching a course at ITU, I could have in my course 2 types of students. So one is the first one is the type, in fact, I've got students from 2 different schools. So I have students from the business school, school mein students hai, and I've got students from the computer science school. So uska code hota hai bachelor's in computer science, something, and जो मैनेजमेंट साइंस या बिजनेस स्कूल वाले होते हैं उनका ये कोड होता है BXMT, right? So let's say I have their student IDs like this. ठीक है? Now I might want to count कि मेरे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स कितने हैं, या इनफैक्ट बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स कितने हैं, और मेरे पास CS के स्टूडेंट्स कितने हैं, right? Now how would I count this? So logically, if I were to think about this, what I essentially need is, okay, I need to count the cells जिनके अंदर BSMT आ रहा हो. That would mean these are the students who are from the business school, and these are the students who are from the computer science school. So let's say मैंने दोनों को count करना. So BSMT वाले students कितने हैं मेरे? How can I count them? I would have to use some sort of criteria जिसके अंदर मैं उससे ये कह सकूं कि अच्छा, so there are 2 ways. One way is कि मैं कहूँ कि अच्छा इसमें BSMT आ रहा हो कहीं पे, और another way is कि it should be starting with BSMT and then it could have anything after that. ठीक है? अब देखिए, सिंपल पहले वाली कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये करूं कि इस रेंज के अंदर if I were to simply count के
what is, for example, what is the number that is equal to BSMT, this is not going to work because BSMT का equal to कोई भी cell नहीं है. And this is going to be returned. This is going to return me 0. Okay, exact BSMT तो कोई भी नहीं है ना. So what I essentially need is that it should be starting with BSMT, but then after that it does not matter what I have. So BSMT के बाद कुछ भी हो सकता है. इसके लिए there's something that we call, there are actually multiple characters जिनको हम wild card characters कहते हैं. So इसको कहते हैं wild card characters. जब आपने बचपन में आप अभी शायद कोई गेम्स भी खेली होंगी या खेलते होंगे, उसमें हमारे कुछ गेम्स के अंदर ना ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं that can basically just stand for anything. So for example, अगर आप simple playing cards use कर रहे हैं, उसमें एक गेम for example होती थी जिसमें आपके पास जोकर होता है. अब जोकर जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी और कार्ड की जगह आप यूज कर सकते हैं. So उसको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते होते थे. It's very similar to this, as in the meaning here is very similar to that. Wild card character का यहाँ पे मतलब होता है, because different types of characters होते हैं basically. One is aesthetic like this, one is a question mark. So these are the most commonly used. And both of these serve different purposes. So basically BSMT के बाद अगर मैं ये asterisk लगा दूँ ना, like this, what this would do is it would tell Excel कि अच्छा BSMT से start होना चाहिए कुछ, because इससे पहले तो कुछ भी नहीं है. लेकिन BSMT के बाद it could be anything. ठीक है, BSMT के बाद कुछ भी आ रहा हो तो that cell basically satisfies my criteria. ठीक है, so I need to count that cell. जो BSMT से start हो रहा है उसके बाद उसमें जो भी हो या ना हो, I am going to count that cell. So if I use it like this, it works. ठीक है, so मुझे क्या मिला यहाँ पे? I got all the cells that are starting with BSMT, but after that they have something else, but we don't know what that is. लेकिन हमने इसको aesthetic को use करके we just counted all those cells. Similarly for the second one, if you just extend it like this, यहाँ पे BSMT की जगह I can change it to, for example, BSCS, और उसके आगे aesthetic लगा दिया. That means BSCS से start होता हो, उसके बाद it could be anything. We're going to count that. And if we do this, we get 3 as the result, which is exactly what we want. Okay, so this is how you can use this wildcard character. I'm going to show you what question mark means as well. ऊपर कुछ examples को use करके. So this is how you can use this. So let me just try something. I don't know if it would work, but I'm just trying to experiment. If I do this, I have this and okay, and कहाँ पे होता था? Yeah, it works. So यहाँ पे देखिए basically मैंने क्या किया. अच्छा मैं and आपको बता दूं पहले वो क्या करता है, just to make it clearer. मेरे पास कुछ भी एक सेल में पड़ा हो ना, for example, let's say Ahmed, and I have Bilal. I could do it like this, equal to this cell reference, then I could use and this cell reference. तो ये क्या करेगा, इन दोनों cells को combine कर देगा, merge कर देगा. This is what it does. And जो वो operator है ना, इसका ये जो है result होता है. ये दोनों cells के अंदर जो भी values है उनको combine कर देता है.
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें स्पेस भी ऐड करनी होती, आई कुड से एंड के बाद आई कुड लेट्स से हैव इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने स्पेस डाल दी, ठीक है। देन आई कैन हैव अनदर and then I have D32. तो ये क्या करेगा, C32 था पहले, that was this cell, and I have and, then I have inverted commas के अंदर space, single space, then I have another and I have this other cell, इन सबको combine कर देगा, and I get this result, Ahmed space Bilal. Right, so this is what and operator does. अच्छा, so this is what is happening here. अब देखिए मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज कर लिया है इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आउट BSMT, ताकि मैं इसको यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कोई वर्ड ना यूज कर, एग्जैक्ट कोई कैरेक्टर नहीं यूज कर रहा हूँ या टेक्स्ट नहीं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे BSMT मुझे फॉर एग्जांपल को चेंज करना पड़ता है लेटर ऑन, या मुझे इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करना है, लेट्स से आई हैव 10 डिफरेंट वैल्यूज, तो मैं हर एक को जाके इंडिविजुअली चेंज नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू रेफर टू दिस सेल व्हाटएवर इज ऑन द लेफ्ट साइड हियर। तो मैंने क्या किया, I refer to this cell C27, so that's the value in this cell, and then I use the AND operator जो concatenate कर देता है, merge कर देता है, किसके साथ करेगा, मैंने inverted commas के अंदर यहाँ पे asterisk लिख दिया, because वो asterisk text एक value, तो मैंने उसको inverted commas के अंदर इस तरह लिख दिया, और ये क्या करेगा, इन दोनों को concatenate कर देगा। So C27 and asterisk इन दोनों को combine करके आपको रिजल्ट वही सेम दे देगा, BSMT asterisk, ठीक है। But then what it means is you can now extend this formula, right? और आपको दोबारा से वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा नीचे वाले सेल के ऊपर, तो ये देखें C28 आ गया यहाँ पे, and this asterisk and inverted commas, and it works very well in this case as well, ठीक है। अच्छा, let me show you another example of that asterisk. So let's say for example मुझे so I need to count the number of cells containing any text in these cells. Okay, so अगर मैं कहता हूँ for example, let me start with this. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ asterisk डाल देता हूँ ना, asterisk means any text. It doesn't matter कि क्या लिखा हुआ है. It's just going to count everything. ठीक है, that's what it means. What's written on the side here. अब यहाँ पे asterisk डाल देंगे, it's just going to count everything, any text. ठीक है, अच्छा, लेकिन we can have some variations. For example, so for example, we can say, अच्छा, I want to count all the cells that have let's say EA or AN. If this doesn't work, AC, HE. Okay, so let's say I'll start with this example first. Let's say I've got this function. मैं क्या करना चाह रहा हूँ? I want to count all the cells that have double P there. ठीक है? So मैं क्या करना चाह रहा हूँ? सारे cells इनके अंदर double P आ रहा हूँ, right? अगर मैं इस तरह इसको लिख दूँ double P like this, it's going to return me 0 because double P के equal तो कोई भी cell नहीं है इसका, right? So it's not going to return me anything. However, अगर मुझे सिर्फ ये करना कि double P कहाँ पर आ रहा है, what I can do is I can use asterisk on both sides. I can use asterisk before, I can use asterisk after. अच्छा, इसके आगे पीछे जो मर्जी हो, it doesn't matter. But if any cell has a double P in it, it doesn't matter what it has before it, what it has after it, you're going to count that cell. ठीक है? So double P जहाँ भी आ रहा होगा, ये इसको count कर लेगा. But if I run this, I get 2 as the result, because देखें apples वाले दो सेल हैं जिनके अंदर यहाँ पे double P आ रहा है like this. ठीक है? Similarly, I could say
count all the cells that have ES in them. Okay? It could have anything after that, anything before that, it doesn't matter. Just count all the cells that have ES in them. If I run this, it returns me 4 because सारे cells के अंदर ही end पे ES आ रहा है, so ये सारे इसने count कर लिए. अच्छा, let me change it a bit. अगर मैं इसको change करके अगर ये कर दूं like this, मैंने पहले वाला स्टेटस खत्म कर दिया. Any idea what the result should be in this case? Anyone? If you're paying attention, any idea what the result should be in this case? Okay, Osama says 0. Osama, can you please explain why that is the case? You can speak if you want. Hello, sir. So because we don't have anything. Osama, we can't hear you. Can you please speak up a bit? Yeah, can you hear me, sir? Yes, now I can. So I said before ES we don't have anything. That's why it will retrieve 0. Yes. So देखें यहाँ पे ES से आप Excel को क्या कह रहे हैं? Count all the cells that have a value that starts with ES, because देखें ES से पहले तो आपने कुछ भी नहीं डाला ना, तो it's only going to count the cells that start with ES, और फिर ES से start होने के बाद कुछ भी हो, that doesn't matter. लेकिन आप यहाँ पे देखें ES से तो कोई भी cell start नहीं हो रहा, so this is going to return me 0. However, if I were to do it like this, कि पहले मैं asterisk डाल दूं, okay, sorry, where is that? पहले मैं asterisk डाल दूं और बाद वाले को खत्म कर दूं. Now this is going to give me the same result, that is 4, because इसका मतलब ये है कि give me all the cells that have values that end that have text that ends at ES. उससे पहले जो मर्जी हो, it doesn't matter, लेकिन end ES पे होना चाहिए. That gives me okay, so there seems to be an issue here. Okay, अच्छा वो sorry, वो cell change हो गया, reference change हो गया. Yeah, should be this. So this returns me 4. ठीक है, और अगर मैं पहले जब किया था, this was returning me 0 like this. ठीक है? So this is how you can use the wildcard character like this. अच्छा, what would I have to do अगर मैंने ये करना होता, count all the cells that have both A and let's say P. A और P दोनों आने चाहिए. Count all the cells that have A and P. So anybody who can tell me what the formula is going to be in the chat box. Chat box में बताएं मुझे इसका formula क्या हो सकता है कि वो सारे cells जिसमें A भी आ रहा हो और P भी आ रहा हो. A और P दोनों आने चाहिए उस text के अंदर. So अगर आप यहाँ पे देखें, peaches भी हो सकता है, इसके अंदर P भी आ रहा है, A भी आ रहा है, apples भी हो सकता है, ये apples भी हो सकता है, oranges नहीं हो सकता because इसके अंदर A तो आ रहा है लेकिन P नहीं आ रहा. So oranges नहीं count होना चाहिए, बाकी तीनों count होने चाहिए. So what could be the formula for that? Any idea? You can write in the chat box. आप मुझे सिर्फ वो ये जो criteria वाला part है ये बता दें सर. ये यहाँ पे criteria में क्या लिखना चाहिए? Anyone? Okay, so Osama says, write it like this, AP
and then asterisk. Okay, is this going to work? Let's try. Let's just run this. I get 2 as the result. मुझे सिर्फ दो रिजल्ट मिल रहे हैं. मुझे कितने मिलने चाहिए? 3 मिलने चाहिए, because पीचेस भी तो आना चाहिए. इसमें अंदर P भी है और A भी है. So this is not giving me the expected result. What should I do? देखिए पीचेस इसके अंदर नहीं आ रहा, because remember what this formula is doing is, ये कह रहे हैं कि A P इकट्ठे आ रहे हो और उनके आगे पीछे जो मर्जी हो. अब A P अगर इकट्ठे, यहाँ पे पीचेस में A P इकट्ठे तो नहीं आ रहे और उस ऑर्डर में भी नहीं आ रहे. So what do we do? Okay, Osama has another suggestion. Let's try this. A comma P. Okay, so let me actually show you what happens with that. आप कह रहे हैं A लिखते हैं पहले और फिर आप देखें कॉमा टाइप करके. देखें कॉमा जब भी आप टाइप करते हैं ना किसी फंक्शन के अंदर, that means you are moving to the next argument. आप ये इससे देखें, यहाँ पे क्राइटेरिया हाईलाइटेड है. कॉमा के बाद आप यहाँ पे अगर P लिखेंगे, this is some third argument. आपने तीसरा आर्गुमेंट डाल दिया यहाँ पे, and that's actually going to give you an error. इसको आप एंटर करेंगे, देखिए आपके पास एरर आ गया. You entered too many arguments for this function, because उसके सिर्फ 2 arguments possible थे, आपने तीसरा भी एक और डाल दिया, which is going to give you an error like this. ठीक है, so that doesn't work either. What you would have to do is, आप ये कर सकते हैं, आप ये asterisk डाल दें पहले. ठीक है, and then you can have okay. Yeah, actually that might not work as well, but I was actually thinking about this. A asterisk A asterisk P asterisk, like something like this. But this is also not going to work, because this is assuming कि A पहले आना चाहिए और P बाद में आना चाहिए. So this is also going to give me 2 as the result. So that is not going to work. Yeah, that doesn't work here. Acha. What we could do here, let me try if it works. I'm not sure, but let's just try. And our function doesn't take that actually. But let's just, yeah, it's not going to give that because our criteria, that's not going to work. But I'm sorry, so it doesn't work. This doesn't work. A और P हम दोनों इस तरह से इकट्ठे नहीं कर सकते. I'll have to look it up कि इसके लिए हमें क्या करना होगा. अगर मैं वो भी करता हूँ ना, A asterisk. सर हम नेस्टेड इफ्स लगा सकते हैं, काउंट इफ एक और यूज कर लेंगे. वो तो कर सकते हैं. मैं सिर्फ ये सिंगल आर्गुमेंट की बात करूं. अगर यहाँ पे अगर सिंगल आर्गुमेंट करना हो तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो मैं वाइल्ड कार्ड का यूज करके देख रहा था अगर वो हो सकता, बट it's not possible like this. So okay, no, so that's not possible. I'll just move on. I'll try to figure out if I can look that up and find if we could do it like this. But you get the idea about how what exactly this asterisk does, right? It's a wildcard character that basically just considers everything that comes after or before something. Now, there's another character, that's this question mark. अब देखें asterisk में, तो मैंने आपको नीचे एग्जांपल दी थी, कहीं पे देखें I've got 4 numbers after this, यहाँ पे I've got 3 numbers, यहाँ पे I've got 5 numbers.
Aesthetic mein it doesn't matter. Aesthetic mein you can have as many characters as you want in place of that aesthetic. Okay, you can have anything there. But what you have to do is, let's say what you want to do is you want to specify the number of characters that can come at a specific place as well. So for example, question mark जो है ना, it actually stands for one individual character. ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क का मतलब है यहाँ पे एक कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है, एक लेटर आ सकता है. So for example, if we were to run this function like this, 5 question marks हैं, and then you have ES, that means कि आपके end पे ES आना चाहिए, whatever it is that you are trying to find, और उससे पहले it can have exactly 5 letters. 5 से कम या ज्यादा letters नहीं हो सकते. So अगर आप यहाँ पे asterisk डालते तो उसमें तो it would not matter how many characters you have before and after. But if you have question mark like this, it means you are specifying the number of characters that can come in those places. So यहाँ पे ES end पे होना चाहिए, इतने characters होने चाहिए. अब 5 characters आप देखें, ES से पहले किसके हैं? Apples, it has 4 characters. So ये तो satisfy नहीं करता. Peaches, it has 5 characters. That satisfies. Oranges, it also has 5 characters before ES. So इसमें oranges और peaches जो हैं ये दोनों satisfy करेंगे. That's why when you run this function, you get 2 as the result. Because ये apples को count नहीं कर रहा वो, उसमें 4 letters हैं before ES. Okay. Similarly, you can also use it between some text. So for example, if I were to use the same text, and the criteria could be, for example, that I should have, let's say, think about it, what we could do, yeah. So let's say what I want to do is, मेरे पास A हो, उसके दरम्यान में 2 question marks, then I have E, right? कि मेरे पास text ऐसा हो जिसमें पहले और बाद में कुछ भी हो, it doesn't matter, ठीक है, पहले और बाद में कुछ भी हो, it doesn't matter, लेकिन कहीं पर text के दरम्यान में ना ये चीज आ रही हो कि एक लेटर A हो, उसके दरम्यान में 2 कोई और लेटर्स हो और फिर E हो, ठीक है? Does that make sense? आपके पास इस तरह का कोई string बन रही हो दरम्यान में, you have 4 letters in such a way at some place in that text कि A आ रहा हो, उसके दरम्यान में कोई 2 characters हो और फिर E आ रहा हो. I hope it makes sense. So let's try to do it manually first. Apples को देखते हैं, A आ रहा है और E आ रहा है, उसके दरम्यान में कितने characters हैं? 3 characters हैं. But we have 2 question marks here. That means this is not going to satisfy. Okay, oranges, we have A here, and we have 2 characters, and we have E. Okay, this satisfies. Peaches, we've got A here, then we have 2 characters, and we have E here. So that this also works. So आपके पास oranges और peaches जो हैं, these are the 2 that satisfy the given criteria. जब आप इसको run करेंगे, you're going to get 2 as the result, because वो again इसमें भी oranges और peaches को count कर रहा है. ठीक है? So question mark में आप individual characters जो है बता सकते हैं कि कितने number of characters आपको चाहिए वहाँ. Okay, so we're going to end here. That's all we needed to do today. I was hoping we could move on to the lookup functions as well, but for tomorrow we're going to be doing this very important function that's called VLOOKUP, and there are some other functions called index and match. We're also going to discuss them. Tomorrow is going to be very
important session. This is a function that's very commonly used, and it's also very useful in the sense that it saves a lot of your time. So this is what we're going to do tomorrow. So for tomorrow, please download the same file. हम इसी पे we can continue again. I'm going to also upload this file जिसपे हमने आज काम किया है, जो हमने चीजें ऐड की हैं इसके अंदर, मैं ये भी upload कर दूंगा. So that's all for today, and if you have any questions, let me know now. I'll be here for the next, let's say, 10 or so minutes. So any questions? So I see one question from Shehzad here, and he is asking if there's a good reference book on Microsoft Excel. Okay, so I can actually share with you a couple of ebooks if you just remind me about this tomorrow, please. Today, my schedule is a bit packed. Tomorrow I can do it. Just let me know tomorrow after class in the chat box, so you can just email me. In fact, a better idea would be if you just post this on Google Classroom. Classroom के ऊपर आप एक ना उस पे post कर दें that you need this book. So that will be a good way to remember this. I'll also have a look at it and upload those ebooks. But generally, my recommendation is इस तरह की hands-on चीजें जो हैं, you don't really learn them very well from some books. A better idea would be to look at YouTube tutorials if you have to. Look at there are some websites. There's one website called Excel Easy. There's other website called Excel Jet. इस पे आप you'll find every kind of function explained there. So आप इस तरह के web pages पे जाके websites जो हैं, they might be a better source if you want to learn on your own further. Because the YouTube tutorials about anything that you want to learn about, आप कोई भी function लिखें, you're going to find some tutorial about that on YouTube. You're also going to find some web pages for that. तो आप वो कर सकते, ठीक है? And I'll also upload the books, of course, if you want. आप वहाँ पे post कर दें, please, Classroom के ऊपर. I will upload them. So let me know if you have any questions.